difficult. Whenever you're judging, you ask this question, what are you going to be looking for? There are a lot of beautiful people, but it's that X factor that I always look for. It's something that cannot be described, but when you look at it, it touches you, and it's something just a little bit more than just a beautiful face. That's what I would look for. I think हर साल बहुत सारी लड़कियाँ बहुत सारे सपने लेके आती हैं, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों के करियर्स यहाँ से टेक ऑफ किए हैं. So आई एम श्योर ये बात ही बहुत खास है कि एक set of new girls will be launched, so to say, and it's always a pleasure to watch beautiful faces. देखिए, मैं तो आपने पूछा कि क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड. यू नो, दीज काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट there will always be a girl who will spring a surprise. So there's always the unexpected, and you never know who's going to spring the surprise and become Miss India. And when I see them, जब मैं देखता हूँ इन लड़कियों को, तो मुझे ताज्जुब होता है जिस तरह उन लोग जिस तरह की मेहनत करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं. और मैं जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, मैं उन सबको मेरे ख्याल से कि यहाँ तक पहुँचे, that's a very very big achievement for all the contestants who are there, about 21 of them. And of course, there has to be only one who will be the number one, and there'll be the runner-up. And there are three, right? 3 winners, right? Yeah, 3 winners, yeah. Well, I'm going to expect the usual, some really beautiful Indian girls, and somebody who's going to win the crown and represent 3 girls who represent our country at different levels, and I feel very happy to be judging. Beauty has a lot to do with how you carry yourself. So you may not be quintessentially beautiful, but if you have some really beautiful qualities, it makes you look more beautiful. Well, I think Femina Miss India एक बहुत ही prestigious contest है, और हम इसको बहुत सालों से देखते आ रहे हैं. The history behind it is amazing. So yeah, I'm very excited today. आज मैं judge. I think this is the second time I'm judging, so I'm very happy to be here. You know, for me, I think confidence is probably the most beautiful thing. ना overconfidence हो, ना under हो, but I think it's the right kind of comfort that you have with yourself. I think that is very important, and honesty, a certain amount of genuineness should be there, and yeah, and an attitude. I think that's important. जी, हम पर्सनालिटी को जज करते हैं. बहुत ज़रूरी है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लुक्स, इट्स अबाउट कैरेक्टर. क्योंकि जो मिस इंडियाज़ है वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स और मिस अर्थ जैसे कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि दे हैव अ गुड पर्सनालिटी. सो आई थिंक इट्स अबाउट पर्सनालिटी मोर देन जस्ट प्लेन लुक्स. जी होगा, एक साइकिल है वैसे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ है, और वहाँ पे यूनिवर्सेस और वर्ल्ड्स को जिताते हैं. तो शायद यहाँ पे लॉबी बन चुका है मेकअप का या कॉस्मेटिक्स का, तो दे कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अदर डेवलपिंग मार्केट्स. तो जहाँ पे उनको कॉन्सेंट्रेट करना होता है, वहाँ से उन लोग मिस वर्ल्ड्स और मिस यूनिवर्सेस चुनते हैं. तो शायद हमारी बारी वापस आएगी, एंड वी आर होपिंग फॉर दैट. Hi, I'm Ruhi Singh. I'm Miss Universal Peace and Humanity 2014. I'm really looking forward to this year's Femina Miss India because the contestants are so beautiful. They're very confident. They are really young, vibrant, and fresh. And I think hopefully India will win a lot of international pageants this year. I am really looking forward to the glitz and glamour of the show. Also, we have a lot of really interesting stars performing, so I really want to see Shahid Kapoor's performance. And Jacqueline's and Kareena Kapoor, she's my favorite.